Good morning, students. So today we will discuss about your beehive's next poem, "Rain on the Roof." It's a beautiful poem about the rainy season, how a person feels when a rain drops on the roof of that person's house. The poet beautifully describes the scenery and the feeling that he feels at the time of rain. The summary of this poem is that in the starting, poet feels the rainy season and the noise of the raindrops fascinate him in a beautiful manner that he recollect all the memories of his past life that he used to do in rainy season, and especially about his mother, how his mother tells him the stories. इस पोयम में पोएट अपनी वो सारी फीलिंग्स याद करता है जो उसे अपने बचपन की याद दिलाती है, या फिर उसे स्पेशली उसकी मम्मी की याद दिलाती है जब वो छोटा था, कि कैसे उसकी मम्मी उसको स्टोरीज सुनाया करती थी. When the poem starts, then it starts with when the humid shadows hover. When the humid shadows hover means humid shadows here. Humid means the humidity in the atmosphere. Shadows means parchai. Okay, so humid shadows here means that the clouds are there in the atmosphere. Because the clouds have the humidity in it, so the poet personifies the clouds as humid shadows over all the starry sphere. Starry sphere means there is all over the stars in the sky there. Okay, so that's the starry sphere. Means जितना भी क्षेत्र था, जितना भी वो मैदान था, वो तारों से भरा हुआ था. मीन्स स्काई इज फुल covered with the stars. Okay, और in that stars उन्हें किसने कवर कर लिया? ह्यूमिड शेडोज ने. ह्यूमिड शेडोज मीन्स the clouds full of humidity, means ready to shower. And the melancholy darkness. Melancholy means depression. Darkness, andhera. Melancholy darkness means when we are in a sad mood, जब हम बहुत दुखी होते हैं. Okay, gently weeps in rainy tears. Gently weeps in rainy tears. Rainy tears means बारिश की बूंदे. Here the poet metaphorically tells us that rainy drops in rainy tears. Rainy tears means जब हम उदास होते हैं, we are in a dark mood, we are not in a happy mood, or we can say that something is disturbing us too much, too intensely. बहुत अधिक तरीके से अगर हमें कोई भी घटना परेशान कर रही है, then what we do, what we normally weeps, and when we weep, then tears comes out. So the poet is personifying here the rainy drops with the tears of arts. Which type of tears? Normally that tears which we shed off in a dark mood. So these four lines said that the poet is in a sad mood and he is normally shedding his tears off. So that mood is symbolically presenting the rainy drops which is shedding off from the sky. What a bliss to press the pillow. What a bliss. Bliss means blessing. To press the pillow, pillow, you know very well what is pillow. Pillow is takya of a cottage chamber bed. Means the poet is saying next line, these four lines is depicting the atmosphere, and this line is depicting what is in the situation poet is. On a cottage, cottage means small hut, चैम्बर कॉटेज के अंदर का कमरा, बेड बिस्तर. ओके, तो ऐसे मौसम में जब कोई अपने बिस्तर पे तकिया सिर के नीचे दबाए लेटा हुआ होता है, एंड लाई
और लेटा हुआ क्या कर रहा है? लिसनिंग टू द पैटर, सुन रहा है टू द पैटर. पैटर मीन्स द साउंड दैट इज क्रिएटिंग आफ्टर द रेन इज ड्रॉपिंग ऑन द रूफ ऑफ एनीबडीज हाउस ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. आपके सिर के ऊपर वो सॉफ्ट स्मूथ बारिश जब गिर रही होती है तो उसकी आवाज को सुनना इज अ ब्लिस while lying on a cottage in a easy mood. Okay, whether you are lying in a in a bed after having the pillow under your head, or in any way you can do that, but it's a blissful moment to lie on the bed and to listen the sweet patter of the rain. Means to say here, द पोएट वांट्स टू से कि जब हम अपने बिस्तर में आराम से लेटे हुए होते हैं उस समय इस सॉफ्ट बारिश की आवाज को सुनना, अपने सिर के ऊपर गिरना का मीन्स ये नहीं है दैट कि हम भीग रहे हैं, इसका मीन्स ये है दैट द रेन इज dropping on the roof of our house. So the whole para, what is it saying? The four lines is depicting the atmosphere that is created by the clouds. Which type of clouds? That is full of humidity. Because of that humidity, it may be that they can shed off the rain. Before that rain, what is the atmosphere? It is the starry sphere, means everywhere there is star. And the melancholy darkness, and if you are in a sad mood, that can be gently weeps, वो आराम से बह सकता है in rainy tears. और ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लिस है कि हम अपने बिस्तर में आराम से लेटे हुए उस रेन की स्वीट आवाज को सुन सकें. नाउ द सेकंड पैरा, एवरी टिंकल ऑन द shingles has an echo in the heart. Every tinkle, tinkle means जो भी लिटिल साउंड रेन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, echo means that is producing a similar sound in the heart of the poet, that is relaxing him and entertaining him, that is soothing his heart whenever he is listening that each and every tinkle of the rain. And a thousand dreamy fancies, thousand means numberless, dreamy imaginary, fancies which are not real. Okay, when you are, it's a common feature of a human being, when you are lying in a cozy bed doing nothing, only to listening to the sweet rain, then at once thousands in number many of the imaginary things comes into your mind, into busy being start means that memories, that fancies, that imaginary images start doing busyness into your heart, and a thousand recollections. First of all, these the imaginary, then what? Thousand recollections. Recollections means your past memories. Whatever you have felt or you have recollected or whatever have had happened with you in the past, that automatically come into your mind when you are in your cozy bed and the sweet rain is dropping. Weave their air threads into woof. Weave their air threads, बुनना शुरू कर देती हैं अपनी हवा के धागे. मीन्स कौन बुनना शुरू कर देती है? दैट द पास्ट रिकलेक्शंस और द थाउजेंड ड्रीमी fancies. As I listen to the patter of the rain upon the roof. When it happened? Whenever the poet listened that patter of the rain upon the roof. Patter is the noise which is producing when the soft rain is dropping upon the roof. Whenever he listens to the patter of the rain, then each tinkle of that sweet sound make a soothing effect in the heart of the poet, and thousand imaginary images and the thousand past collections become exist
into his mind and made him busy into their mind. So what this whole para means कि जैसे ही पोएट उस बारिश की गिरने की आवाज को सुनता है, उसकी आवाज की हर टिंकल लिटिल से लिटिल साउंड उसके हार्ट में एक स्वीट सूथिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत सारी नंबरलेस इमेजिनरी इमेजेस बनना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ जो उसकी पास्ट की मेमोरीज हैं वो सब उसके माइंड में इकट्ठा हो जाती हैं जब वो ये बारिश की आवाज सुनता है। नाउ वी मूव टू अवर थर्ड पैरा, दैट इज नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। The most memorable moment which strikes the poet most into these imaginary images, into these thousands imaginary images, that is the memory of his mother, as she used in years ago. As she used in years means as whatever she used to do in the past years, that all memories come to into the mind of the poet. To regard the darling dreamers, to regard the darling dreamers means those who are dreaming, those one the darling ones. And to regard means उन सपने देखने वालों को रेस्पेक्ट करने के लिए, एर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, एर शी लेफ्ट बिफोर शी लेफ्ट, इससे पहले कि वो छोड़ दे, देन टिल द डाउन मीन्स इवनिंग। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, आई फील आई हियर पोएट वो महसूस करता है हर फॉन्ड लुक, फॉन्ड लुक मीन्स जो उसे बहुत पसंद है, किसका, मम्मी का, अपनी मदर का वो प्यारा सा लुक जो उसको बहुत पसंद है, वो ही देखता है अपनी रिकलेक्शंस में। एज आई लिस्ट टू दिस रिफरेन, जैसे वो अपनी मेमोरीज में से लिस्ट करता है कि उसने क्या चीज मेमोराइज करी, तो दैट मेमोरी, स्वीट मेमोरी ऑफ हिज मदर, whatever she used to do, should used to tell the stories to the little baby and made him sleep and made him see the dreams when is which is played upon the shingles by the patter of the rain, which is played, ये सारी मेमोरीज जो उसने अपनी मदर के साथ स्पेंड की थी, वो सारी मेमोरीज उसको उसकी मम्मी के छोड़ने से पहले ही या इवनिंग होने से पहले ही उसको अपने मेमोरीज में सबसे ज़्यादा रिमेम्बर रहती हैं, जैसे ही ये बारिश के स्वीट पैटर की आवाज़ होती है। मीन्स इन द पोएम द पोएट इज रिकलेक्टिंग द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट of his life, that is to spend the time with his mother. Whenever his mother spend time with him and tell him the stories and let him sleep into the cozy bed, that is the most memorable moment for the poet, that he is recollecting. अगर हम इस पोएम को शॉर्ट समराइज करें, मीन्स पोएट क्या कह रहा है कि बारिश के मौसम में जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, आराम कर रहा था, तो उस बारिश की बूंदों की आवाज से उसके दिमाग में ढेरों खूब सारी इमेजिनरी इमेजेस बनती हैं। उन इमेजिनरी इमेजेस में उसके वो रिकलेक्शंस भी हैं जो उसकी लाइफ के पास्ट हैपनिंग्स से हुए हैं। उन सब हैपनिंग्स में, मेमोरीज में, इमेजिनरी इमेजेस में जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा याद रही वो थी उसकी मदर की मेमोरी, जो उसको उस बारिश की आवाज़ में सबसे ज़्यादा सूथिंग इफेक्ट देती हैं, और उसके अलावा उसे कोई और चीज़ इतनी याद नहीं रहती है। दैट इज़ द ऑल इन योर poem, because it's a short poem, rain on the roof, it's a very sweet poem,
Lyrical poem, here is the metaphor is used, also the personification. As you see here in the poem, here the humid shadows, shadows normally of whom we have human beings. Okay, so humid shadows, clouds is here personified as shadows, that's the personification. Okay, melancholy darkness, here is the rhyming scheme. Okay, bad, overhead, spheres, tears, heart, start, woof, roof, agon, down. Okay, refrain, rain. This is the rhythmical atmosphere of the poem. And first para is about the starting of the rain. Second para about that there are the images that is creating in the mind of the poet. The third para where that image becomes clear and he recollects that his mother is there to tell him the story. पहली में क्या है, पहले पैरा में है वो सारा एटमॉस्फेयर जो कि बादलों की वजह से और रेन की वजह से बनता है. ओके, दूसरे पैरा में उस बारिश की वजह से जितने भी आइडियाज पोएट के दिमाग में आ रहे हैं उनके बारे में है. थर्ड पैरा में है वो इमेजेस जब क्लियर हो जाती हैं तो उसे पता लगता है दैट ही इज ओनली रिकलेक्टिंग अबाउट हिज मदर्स मेमोरीज. Okay, so it's a very beautiful poem by Coach Skinner in which he is summarizing his experience on a rainy day, especially we can say on a rainy evening, where his mind is relaxes and he is totally in a good mood from that melancholy darkness. It becomes a bliss to him that a echo emerges in his heart and he remembers the memories of his mother. Okay, students, so that's the all in this poem. All the best for your studies. Just to prepare your studies very well. Goodbye.